हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 3 क्लीनिंग ऑफ फूड। तो हम क्लीनिंग ऑफ फूड में क्या देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उससे पहले जो उसका रॉ मटेरियल होता है या सीरियल्स होती है तो उसकी हम सफाई किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल and plant sources. However, food obtained from these natural sources cannot be used without purification or cleaning. For instance, we remove the skin of some vegetables and fruits before consuming them. जैसे कि हम फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को साफ करते हैं उन्हें पील करके। बिफोर कुकिंग, राइस एंड pulses are cleaned to remove dust and other impurities. Most of the food items we obtain from plants and animals are impure. They contain various inedible substances which need to be separated. अब आते हैं मिक्सचर्स पर कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब सब्सटेंस which contains two or more different kinds of substances in such a way that its components can be separated by physical means, it's called the mixture. For example, air is a mixture of several gases. जैसे कि हम एयर में देखते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर, इन सबसे मिलकर हमारी एयर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर मिलकर के बनी होती है। डस्ट एंड स्मोक्स पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ क्रीम, वाटर एटसेट्रा। द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। अब आते हैं प्योर सब्सटेंसेस कि जो शुद्ध जो हैं उनके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है। दे आर सब्सटेंसेस विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड pure substances. For example, sugar, common salt and metals like iron, copper are examples of pure substances. A pure substance has definite composition, melting point, boiling point and density. Uniform composition throughout. फिर आता है cleaning of food is necessary कि क्यों हमारा फूड को क्लीनिंग करना जरूरी है। Sometimes the food substances we obtain from plants and animals contain harmful substances. For instance, खेसरी दाल grows along with अरहर दाल, इसके साथ में ये ग्रो कर जाती है। तो खेसरी दाल if consumed for a long time may cause paralysis. अगर हम इसे ज्यादा खा लेंगे तो हमें लकवे की शिकायत हो जाएगी। Similarly, mustard oil may be contaminated with argemone oil which causes nervous disorders. यानी कि जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेज हैं वो कॉज करेगी। Thus, before any substances is consumed, it must be freed from its harmful components. Removal of harmful and undesirable components from any food material is called cleaning of food. अब ये कितने तरीके से होता है। टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, समटाइम्स राइस एंड पल्सेस कंटेन्स स्मॉल स्टोन्स विच इफ बी ईटन कैन बी हार्मफुल फॉर आवर टीथ एंड बॉडी. इट इज नेसेसरी टू रिमूव them before cooking the rice and pulses. River water may be contaminated with sand and harmful germs. It must be cleaned before being supplied to our homes. Water is purified by means of waterworks in a city and water filters in our homes. टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिसीजेस। अब डिसीजेस से हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बी कंटामिनेटेड विद जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स विच इफ कंज्यूम्ड विदाउट क्लीनिंग मे कॉज वेरियस डिसीजेस. दस वी मस्ट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग दैम. टू इम्प्रूव टेस्ट, अब हम इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। फूड मटेरियल इज क्लीन्ड टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट. Would you like to taste dust and hair in your food? नहीं ना? No, it spoils that flavor of food. Thus, cleaning of food material is essential to improve its taste, to make it more nutritious. इसको करने के लिए हम जितने भी undesirable components हैं उनको हम अपने खाने से हटा देते हैं। Methods of separation. In day-to-day life, we separate a number of mixtures. For example, we wash rice and pulses before cooking to remove dust particles. Flour is sieved to remove bran. Tea is strained to remove tea leaves. Some unwanted components of food are visible. For instance, small stones mixed in rice, wheat or pulses can be distinguished easily as they have different shapes, sizes and colors. However, in a mixture of sugar and water, we cannot see sugar as it is invisible in the solution. Separating solids.
from other solids. The common properties used to separate solids from a mixture of solids are size, shape, weight, magnetism, or solubility in water. Some methods are described below. Harvesting किस तरीके से होती है? The process of cutting and collecting crop from the field of is called harvesting. Nowadays, a machine called harvester is used for this purpose. The cut and collected crop is called harvest. The time of the year when crops are reaped is called the harvesting time. Threshing. Removal of grains from the stalk is called threshing. It is done by the following methods. Beating stalks on the ground, trampling the harvested crop by bullocks or camels. Nowadays, a combined harvester is used for harvesting and threshing simultaneously. Winnowing. Separating a lighter component from its mixture by means of wind is called winnowing. This method is often used by farmers to separate the husk from grains. जब हम उसे इस तरीके से चलाते हैं जैसे कि wheat को चलाते हैं, this method makes use of the fact that chaff is lighter than grains. The mixture of chaff and grains is allowed to fall from a lighter. When it falls, grains being heavier from a heap on the ground, while husk being lighter flies away. इस तरीके से ये आपको डायग्राम में दिखेगा किस तरीके से ये इसे विनोइंग करते हैं. हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से जब साफ करते हैं तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों के अंदर अपनी मम्मी को इस तरीके से अनाज को साफ करते हुए या फिर राइस को साफ करते हुए. When the components of a mixture are different in color, size and shape, they are separated by hand picking. This method is preferred when the particles of impurities are clearly visible, the quantity of mixture is small, the impurities are present in small quantities. Sieving. इस तरीके से छानने की जो प्रक्रिया होती है चलनी से. हैंड पिकिंग इज वेरी थिन एंड टाइम कंज्यूमिंग. Thus, sieving is done. This method is used to separate a mixture in which components are of different sizes. The impure grains are placed on a sieve. Small particles of stone and seeds of other plants like rye, mustard, which may be mixed in the food material, are sieved out, while grains which are bigger than the pores of the sieve remain on the sieve. अब आता है separating insoluble solids from liquids. The water which we use must be clean, colorless and odorless. Rivers are an important source of water. जैसा कि हम सभी को पता है, waste materials from industries flow into the rivers and their water becomes impure. अब इसीलिए हम लोग जो insoluble solids है उसको वाटर से अलग करने के लिए क्या क्या तरीके यूज करते हैं. अब आता है sedimentation and descentation. The process in which heavier insoluble particles are allowed to settle down is called sedimentation. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सेडिमेंटेशन से ये क्लियर लिक्विड तो ऊपर रह गया और सेडिमेंट यानी कि प्रेसिपिटेट नीचे रह गया है जो भी impurities है. This method is used to separate heavy impurities like sand. When impure water is allowed to stand, heavy impurities settle down. The solid impurities which settle down during sedimentation are called sediments. The upper layer consists of clear water which can be poured into another container. This liquid above the sediment is called supernatant. जो ये है उसे कहेंगे अपन supernatant. और जो ये है sediment. The process of transferring the clear liquid after sedimentation into another container without disturbing the sediment is called descentation. अब जो ये हमारे पास में जो प्योर लिक्विड है उसको जब हम इसमें ट्रांसफर करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? डिसेंटेशन. Mix a little sand in water and let the mixture stand for a few minutes. Sand will settle down. The process of sedimentation forming sediment at the bottom and clear water will separate as forming sediment at the bottom and clear water will separate as the upper layer. ये आपने देख लिया है. अब आएगा हमारा फिल्ट्रेशन. The process by which we separate the insoluble and suspended solids of various sizes from a liquid using a filter is known as filtration. A filter has pores which separate the solid components from a liquid. The size of the holes in the filter is decided according to the size of the particles which are to be separated from the liquid. ये इस तरीके से कोई भी एक
फनल टाइप या कीप टाइप जो होगी, जिससे हम लोग वाटर को फिल्टर पेपर के अंदर से छान लेते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मेकिंग टी, वी फिल्टर आउट टी लीव्स using a strainer. Tea is poured through a strainer which is fitted with a wire mesh. The tea leaves are retained on the strainer while the liquid tea passes through the wire mesh into the cup. अब आता है हमारे loading. The finer particles of impurities take a lot of time to settle down. Loading is the process by which particles of impurities are made heavier in order to speed up sedimentation. The rate of sedimentation is increased by adding some chemicals. For example, alum is added to water to increase sedimentation. The alum helps the clay particles to combine with each other, which makes sediments. The upper layer of clear water can then be descented or filtered. Separating soluble solids from liquids. The solids which completely dissolve in water constitute soluble impurities. For example, seawater cannot be used for drinking purpose as it has salt dissolved in it. To make it fit for drinking, the salt has to be separated. However, the process of separating salt from seawater is done to obtain salt, not drinking water. Soluble impurities can be separated from water by using the following techniques. Evaporation. The process of converting a liquid vapor by heating is called evaporation. यानी कि वो evaporate हो गई है, जो वाष्प बनी है या steam जो बनी है वो evaporation कहलाता है. Evaporation takes place continuously wherever water is present. When impure water is heated, water changes into its vapor state, leaving behind solid impurities. The water vapor is collected in a separate container and cooled down to obtain pure drinking water. This method is largely employed to obtain common salt from seawater. Salt is obtained from seawater by evaporation. The seawater is collected shallow ponds and allowed to evaporate in the sun. Water evaporates in a few days, leaving the salt behind. Common salt is then obtained by further purification. The shallow ponds used for making salt from seawater are called salt pits. ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. सो आप जाकर के इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये शेयर करें वीडियो को. थैंक यू.